So I've started this recording of the second session as well. So we were discussing this inverse proof, A product B inverse is B inverse A inverse. Just at the time someone asked कि भाई वो आप inverse के proof करके दिखा दें. We go in the classical style, taking left hand side to be A product B का inverse. So what we do, one way is that हम दोनों साइड से ए प्रोडक्ट बी से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स ए प्रोडक्ट बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी इंटू ए प्रोडक्ट बी इनवर्स, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड जो है ये मैंने लेफ्ट से किया है, यहाँ पे राइट से किया है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा क्योंकि ए प्रोडक्ट बी एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स है, तो इनका इन्वर्स आपस में आई हो जाएगा. दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से एक्स ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू आई. और फिर आप राइट साइड से बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स ए बी एक मैट्रिक्स है जिसको आपने राइट साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आई को भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. आई और बी इनवर्स का प्रोडक्ट बी इनवर्स आएगा, जबकि यहाँ इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक्स ए अलग हो जाएगा. बी और बी इनवर्स जो हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर. बी एंड बी इनवर्स multiplied together gives you the identity matrix, and that makes xa into identity, which makes xa is equal to b inverse. Then again multiply from right side this last result by a inverse. So एक मैट्रिक्स एक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए इनवर्स है, because on right hand side b inverse पहले से था, अब a inverse से हमने multiply किया है. On the left hand side the associative property will make this x product a multiplied to a inverse becomes x into product of a and a inverse, whereas the right side is simplified to b inverse a inverse. Here a inverse becomes identity matrix. So x into identity matrix is b inverse a inverse, or x is equal to b inverse a inverse, which is the right hand side, and we have completed the proof. इसी तरह हमने प्रूफ किया था ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो खुद ए होगा, और इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि भाई हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट साइड पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया. तो इस एक तो राइट हैंड साइड है और एक राइट साइड ऑफ एक्स है. राइट साइड ऑफ एक्स को ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो इधर ऑन द राइट हैंड साइड ए इनवर्स इनवर्स को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया. अब ये ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स है और ये इनवर्स है, तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स और वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बनेगा. सो नाउ आई हैव एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अब क्या किया, अब के लेफ्ट हैंड साइड पर राइट से ए से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी को भी ए से मल्टीप्लाई किया. दैट मेक्स लेफ्ट हैंड साइड लुक व्हाट, एक्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट विद ए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक्स अलग हुआ, ए इनवर्स ए, राइट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ए इज ए, राइट यहाँ पे ए इनवर्स ए बिकम identity, so x is equal to a, so hence we got the right hand side, which proves. Now this proof can be extended to inverse of a power of matrix. A square का inverse, a cube का inverse, a 4 का inverse. ये मैंने प्रूफ करके यहाँ तो प्रूफ किया हुआ है, लेकिन इस प्रूफ को मैंने इंक्लूड नहीं किया. एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में मजीद बात कुछ भाई. An elementary matrix is a matrix obtained by applying a single elementary row operation on an identity matrix. Identity matrix पर एक elementary row operation लगाने से जो कुछ हासिल होता है उसको elementary matrix कहते हैं, और elementary matrices के inverse कैसे निकाले जाते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था.
अगर आपने किसी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है और एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हासिल किया है, तो उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो कैसे हासिल होगा? जिस नंबर से आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था उसके रेसिप्रोकल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द इनवर्स। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा। रो इंटरचेंज, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दूं तो आपको ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा। इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स ये खुद ही होगा, क्योंकि रोज फिर वापस आ जाएंगी। और इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स और इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो हमें ओरिजिनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी तरह स्केलर मल्टीपल ऑफ एक रो को किसी दूसरी रो में ऐड करते हैं। सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दिया, तो आपको एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये ऑपरेशन किस पे किया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। इसका इनवर्स क्या है? जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था रो 2 को, उसी रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दो, तो इसका इनवर्स ये है। So we say that inverse of operation for scalar multiplication is this. Inverse operation of row interchange is this. Inverse operation of a multiple of a row added to another row is this. Thus each elementary matrix is invertible. And this proof we discussed in class. What's the basic rule for multiplying matrix product together? Like when to apply from left and when from right. मैं पहला जुमला सुन के तो डर गया था कि what is the basic rule for multiplying matrix products together? These rules are listed in matrix algebra. इसे जो इससे पहले सबसे पहले काफी पहले डिस्कस किया था मैंने कि ये मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है मैंने आपसे डिस्कस तो किया है, मगर इसमें बहुत सी चीजें प्रूफ नहीं कराई। लेकिन जो आपका सवाल का दूसरा जुमला, लाइक व्हेन टू अप्लाई फ्रॉम लेफ्ट एंड व्हेन टू अप्लाई फ्रॉम राइट, this is very clear in these proofs. इस प्रूफ में आप लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। क्यों? आपने ए बी इनवर्स को पलटना है। उसको पलटने के लिए स्टार्टिंग विद ए बी इनवर्स, अब मैं अगर राइट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी को राइट से मल्टीप्लाई किया। ना वाई राइट से? ओह बेटा, you are asking because their m by n order is not mentioned. I'm sorry you have forgotten that inverses के लिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसीडर करते हैं। That means अगर a हमारे पास या j n by n है यानी स्क्वायर है, तो b जो है वो n by n के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दो बातें हैं इस प्रूफ में कि ए, अगर मैं ए प्रोडक्ट बी लिख रहा हूं, शुक्रिया, यू गॉट इट। सो कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस, पूछा गया है कि ऑल्सो डज एनी मैट्रिक्स विच इज इन्वर्टेबल ऑलवेज mean it is also has an existing determinant. Every square matrix has a determinant. It may be 0 or not. That is something else.
अच्छे दिन। I hope you've got why and when you have to multiply from right and when you have to multiply from left. Elementary operations की बात कर रहे थे, and why the reduction method works for finding out inverse is that के अगर आप किसी मैट्रिक्स A पर मुख्तलिफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते चले जाते हैं, इसका मतलब ये है, मैंने ऊपर बताया था कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 और मैं इस पर कोई ऑपरेशन लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पर ऑपरेशन लगाता हूँ 2r1 + r2. So I hope you remember that what's the result? 2 - 2 is 0, 2 × 3 is 6, + 5 11. Now corresponding to this, what is the elementary matrix? The elementary matrix will be 2 × r1 + r2 1. इसको मैं कह रहा हूँ कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है। अब चाहे मैं ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊं मैट्रिक्स ए पे, चाहे मैट्रिक्स ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दूं विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, the result is 1 × 1 0 × -2, 1 × 3 0 × 5, 2 × 1 1 × -2 0, 2 × 3 6, 6 + 5 11. So whether I apply an elementary row operation on a given matrix or जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है उससे मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स ए को, दोनों सूरत में मेरे पास रिजल्ट सेम आता है। चुनाचे जब मैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स लगाकर ए ऑगमेंटेड आई को रिड्यूस करता हूं आई ऑगमेंटेड बी यूजिंग some elementary row operations, correspondingly उनके जो elementary matrices हैं उनसे मैं a को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट कीजिए k elementary matrices लगाने के बाद a जो है वो आइडेंटिटी बन गया, a जो है वो आइडेंटिटी बन गया। सो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो है इनका प्रोडक्ट जो है that has to be the inverse of a because this all elementary matrices multiplied together into matrix A becomes identity matrix. That means A inverse is this. और इसका इनवर्स लूंगा तो इन सब के इनवर्सेस रिवर्स ऑर्डर में लिखे जा सकते। As I told you that I will share all these files on the resources. You can further give a thought to all these things. ये एक टू स्टेप प्रूफ लिखा हुआ मैंने और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं and that's all about this file and let me go to the next one जहाँ पे हमने कुछ exercises discuss की हुई हैं. Can you see this sheet where top is exercise 1.3? G. I'm sharing new PDF file. Okay. एक मैट्रिक्स है मेरे पास A, एक मैट्रिक्स है मेरे पास जीरो मैट्रिक्स. K times A is 0, then अगर K times A 0 है, if K times A is 0 मैट्रिक्स, इसका मतलब या तो मैट्रिक्स A खुद 0 है, स्केलर K 0 है या मैट्रिक्स A खुद 0 है. मैंने प्रूफ डिस्कस नहीं किया, शायद ये मैंने प्रॉपर्टी भी डिस्कस की होगी शायद मैट्रिक्स अलजेब्रा में.
AB or BA are both defined, then both AB and BA are square matrix. यानी अगर मैट्रिसेस A प्रोडक्ट B और B प्रोडक्ट A दोनों मालूम किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। द रीजन इज कि अगर A मेरे पास m/n है और B जो है p/q है, तो ये मैं मल्टीप्लाई सिर्फ उस वक्त कर सकता हूं व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स हियर एंड नंबर ऑफ रोज हियर आर इक्वल। इसका मतलब है मैट्रिक्स B शुड बी n/q। ओके, अगर B प्रोडक्ट A भी डिफाइंड है, तो अब यहां जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब मैट्रिक्स A जो है वो q/n होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, A प्रोडक्ट B will give you n/n matrix and B product A should give you q/q matrix. So both are square matrices, and it can also be proved that q and n are equal. खैर ये वो चीजें हैं जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं की, एंड आई डोंट they have not given much emphasis to these things. ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं, लेकिन ट्रेस की एक प्रॉपर्टी जो है वो जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मैट्रिक्स अगर आपके पास दो हैं स्क्वायर मैट्रिक्सेस, तो उनके जो ट्रेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4 -1 5 2 1 6। सो ट्रेस अगर ये मैट्रिक्स ए है, तो ट्रेस का मतलब है कि आप इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए, यानी 2 + -1 + 6, दैट मीन्स 7। अगर एक और मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 9 0 5 5 1 2 -1, तो इसका ट्रेस का मतलब है कि आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर लीजिए, 1 + 5 -1, and that is 5। अब आप A और B को ऐड कर लीजिए, so 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 9 12, 4 + 0 -1 + 5, 5 + 5, 2 + 1, 1 + 2, and 6 - 1 5। और अब आप इसका ट्रेस निकालिए A + B का मतलब है अब इसके डायगोनल्स ऐड कर लीजिए, so 3 + 4 + 5, so that is 12, which is same as the sum of these two traces. That is what is given here. This property is sometimes used, though I have not discussed this in detail, but so reducing matrices to echelon form, इसकी कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर हैं, एंड एग्जाम्पल्स हम क्लास में भी करते रहे हैं। गॉस एलिमिनेशन की एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर। गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस जो है कंप्लीटली सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, so you can go and see infinitely many solutions with the 1 parameter and 2 parameter। ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम्स जो हैं उनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये प्रूफ्स जो हैं इनकी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एम्फसाइज भी नहीं किए हैं। A प्रोडक्ट B की जनरल फॉर्म जो है उसके जरिए भी प्रूफ किया सकते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रूफ सिमिलर टू दैट ऑफ A इनवर्स, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया। इनवर्स फाइंड करना जॉइंट मेथड से और रिडक्शन मेथड से, दोनों आपको आने चाहिए। इनकी एग्जांपल्स यहाँ कुछ की हुई हैं, रिडक्शन मेथड से किया हुआ है,
in general. So that was the second list. Geometry of linear system. Can you see the page with the heading Geometry of Linear Systems? क्या आप लोगों ने ऑडियो ऑन नहीं किया हुआ? या मैंने रिसीव किया हुआ ऑडियो? ओके, मतलब आपने गालिबन इस बात का जवाब दिया है कि आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ लीनियर सिस्टम्स in R square, any line can be written as this, where x is the vector, position vector of any arbitrary point of the line. V is a vector along the line. P naught or x naught is the position vector of a particular point. Then vector equation of a line. Now, मैंने लिखा तो यहाँ R2 है, लेकिन this is valid for R3, R4, R5 because इस फिगर में कोई डायमेंशन नहीं बनेगी. बस a vector is required along the line and a point of the line is required to be known. T की वैल्यू 0 हो तो लाइन का पॉइंट P नॉट आ जाएगा. T की वैल्यू कुछ हो, लाइन का कोई और पॉइंट आ जाएगा. T की वैल्यू नेगेटिव हो, लाइन का एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो जब आपको ये चीजें दी हुई हों R2 में, as I mentioned before, there is some point known. If x naught is not there, इसका मतलब the line is passing through the origin, because x naught 0 होने का मतलब है कि अब line इसी origin से गुजर रही है. So there are some demonstrations using this idea. R3 में भी ये लिखा जा सकता है. प्लेन, अगर आपके पास एक प्लेन है, एक उसका नोन पॉइंट है, एक उसका आर्बिट्री पॉइंट है, and you know the normal vector to the plane. In that case, the equation of the plane, ये हमने डिस्कस किया है क्लास में, and that is important. Line segment we have discussed in the class. Which in its simplest form can be written as this. When t is equal to 0, it's only point x naught. And when t is equal to 1, it is only point x1. For other values of t, you will get points between x naught and x1. This is described here. Now, dot product form of linear system of equations. So if you have a linear system of equations, the left sides are all dot products. किस का? Rows of coefficient matrix, dot product with the column of unknowns, x1, x2, x3, so on. खैर ये issues भी मैंने discuss नहीं किए, and they are not also considered as important. ये सब examples जो हैं ये हम इस तरह की क्लास में कर चुके हैं. Non-trivial solutions for a given system of equations where 3 free parameters are there. 2-parameter form of vector equation. This has been discussed in the class.
अगर ये प्लेन है मेरे पास और इस प्लेन के मेरे पास दो वेक्टर हैं, v1 और v2 दोनों प्लेन के ऊपर है। इफ देयर आर टू वेक्टर्स ऑन अ प्लेन, उन वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट अभी डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। एनीवेज, अगर ओरिजिन यहाँ पे है, P0 is a known point, and I consider multiples of these vectors, red vectors v1 and v2, अगर मैं कंसीडर करता चला जाऊं और P0 का जो पोजिशन वेक्टर उसमें ऐड करूं, so that will generate points on the plane. It can be written in this form, it can be written in this form. If x0 is 0, is count there, the plane is passing through origin. So you can go through the conclusion. Examples की भी हैं कुछ यहाँ पे, R4 की भी, homogeneous, non-homogeneous, सारे कई problems इसमें solve हैं. You can see them yourself when I post these things. मैं थोड़ी देर में ही इसको अपलोड कर दूंगा आपके resources of LMS में. So these are all solved problems or examples. You can, whenever you find any confusion about any of this, you can just take a pic and ask me a question on the group, WhatsApp group. ये exercise के कई सवाल आते हैं. There it is. A few minutes for determinants. Can you see this determinant sheet? Can you be able to see the determinant sheet? Okay. Basic determinant is of 2 by 2 order, which we take as a definition. And the definition is leading diagonal elements multiplied minus trailing diagonal elements multiplied. AB minus. In 3 by 3, you have been using this expansion method from your early days. And if I write down this in detail, what I will get: A11, A22, A33. This into this. Now this into this will be negative. A11, A23, A32 minus A12, A21, A33 plus A12, A23, A31 plus A13, A21, A32 minus A13, A22, A31. And from where we noted down that ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, और इन एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स में फर्स्ट इंडेक्स of each element of the matrix A used, first index की तरतीब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and so on, whereas second indices जो है वो permutations है 1 2 3 के. तीन नंबर्स के 6 परम्यूटेशंस हो सकते हैं, लिहाजा 6 एलिमेंट्री प्रोडक्ट होंगे. अगर 4x4 में चलेगा तो 24 एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स होंगे इस तरह के, जिनमें से हर एक में फर्स्ट इंडेक्स जो है 1 2 3 4 होगा, बाकी दूसरे इंडेक्सेस जो हैं वो परम्यूटेशंस होंगे 1 2 3 4 के. माइनर क्या होता है? लीविंग आउट वन रो एंड वन कॉलम, वी गेट द माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो अगर मैं मैट्रिक्स ये है तो M23 का मतलब है सेकंड रो निकाल दो, थर्ड रो कॉलम निकाल दो, सो यू गेट द माइनर. कोफैक्टर, ये जो माइनर है इसके साथ कुछ लुक करना है
और उस क्या करना है, -1⁻k+L। अगर आप एलिमेंट नंबर AKL ऑफ इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए यहां मैंने वो नोटेशन इस्तेमाल किया हुआ है। तो kth रो के nth एलिमेंट का अगर आपको फैक्टर लिख रहे हैं, -1⁻k+L into determinant of the corresponding minor. So you have got 83 minors. अच्छा अब ये, हाँ एक चीज, यहाँ जो नोटेशन इस्तेमाल किया है, एक हमने इनिशियली एक बात कही थी, कहीं कहीं एक नोटेशन इस्तेमाल होती है, ये एक ही चीज है, लेकिन इट इज नॉट सेम एज, बिकॉज दिस नोटेशन AIJ और A23 means cofactor. Cofactor of what element of the matrix A? Second element, second row, third element, second row, third column. So हमने पीछे देखा मैट्रिक्स ए ये था, इसकी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम निकाल दी, करस्पॉन्डिंग माइनर आ गया, उसका कोफैक्टर कैलकुलेट किया, यानी डिटरमिनेंट लेके -1⁻2 + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन वी सॉल्व इट, सो दैट विल बी अ नंबर दिस। इसी तरह अगर मैं इस मैट्रिक्स हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूं, तो आई विल मेक अ 4x4 मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज लूंगा तो दैट विल बी the adjoint of the matrix. अब ये सारी तफसीलात जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, some are in symbols, but all relevant to the knowledge of determinant. ये definition हमने discuss की थी, but it is more important that you know how to find a determinant. यहाँ पे मैं theoretical details जो हैं उनके बारे में कोई खास बात नहीं करूँगा. Now I've got 2-3 minutes left. Yes, there is a question. No, there is a comment. So if you have a question, you may ask, or my session expires in few minutes. You can open your mic and you can ask a question, or you just write down in the comment. Cross product. Let me work out in R3. So in R3, we have got one vector, another vector, when we say we are talking about cross product, the elementary definition, school definition is magnitude of first vector, magnitude of second vector, sine of the angle between them into unit norm. To get some idea from this basic definition, if you remember your elementary study, pre-university study days, unit vectors in the direction of x, in the direction of y, in the direction of z. अगर मैं I cross j consider करूं, तो unit vector means length 1 into sine of what is the angle between I and j?
90 degrees. What's the vector which is normal to both I and j? That vector is k. And that makes I cross j 1, 1, sine 90 is 1. So it is equal to k. But if I work out j cross I, magnitudes are still same. What's the angle now between them? If I take angle from I to j, it's positive 90, but if I take from j to I, it will be negative 90. And still the unit vector perpendicular to I and j is same. So we get j cross I is equal to 1, 1, sine minus 90 is minus 1. So that means j cross I is equal to minus of k. So working out with this, if we go in this direction, I, j, k, I, that means j cross k will be I, but k cross j will be negative I. Similarly, k cross I will be j, but I cross k will be minus j. Once we understand this, we can go for the details. And the details means you write down u cross v in detail. So for that, I'll add to this sheet. I've got only 1.5 minutes left. We write down u1i plus u2j plus u3k cross v1i plus v2j plus v3k in classical notation. So I'll find that there will be 9 products. Here I also work out I cross I. 1 into sine of the angle. I और I के दरमियान एंगल 0 है, इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर नहीं है, so that is 0, which is the same as j cross j, which is the same as k cross k. So out of these 9 cross products, I will have 3 zeros and 6 non-zeros that I will be writing down using these properties. Okay, I cross j is k, whereas j cross k is I. J cross I is minus k, and these 4 relations. So when you write down